अस्सलाम वालेकुम, ECC टॉक इट आउट एक और पॉडकास्ट। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के जो हमारे गेस्ट हैं बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं। ऑब्वियसली एवरीवन नोज हिम, टप्पू जवेरी। टप्पू भाई कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम ताहा, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, माशाल्लाह। फाइन। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग और इट्स अ प्रिविलेज टू हैव यू ऑन आवर पॉडकास्ट। वही हमारे जो रिवायती क्वेश्चंस हैं, टप्पू भाई इसी से स्टार्ट करेंगे। जस्ट लाइक विद एवरीवन, हाउ इट ऑल स्टार्टेड your photography career in the beginning and कैसे इस कैसे आई ये जर्नी कैसे शुरू हुई? हाँ एग्जैक्टली। अच्छा, जब मैं तकरीबन 9 साल का था तो मेरे वालिद साहब ने मुझे एक कैमरा दिया था। प्लास्टिक कैमरा था, डायना के नाम से। उस टाइम वेस्ट जर्मन प्लास्टिक कैमरा था वो। उससे वो जब मिला तो मैं तस्वीरें लेने लगा और फिर तस्वीरें थोड़ी ज़्यादा अच्छी हो गई एंड आई हैड द चांस ऑफ शोइंग माई वर्क टू द डॉन न्यूज़पेपर। आई हैड अ पिक्चर जिसमें लाहौर के कनाल के अंदर घोड़े चल रहे थे एंड उसकी पिक्चर ले ली थी। वो नहा रहे थे घोड़े, बट जब वो उन्होंने देखी तो उन्होंने पब्लिश की और उसके नीचे उन्होंने बड़ा कोई मज़े का कोई इकबाल का शेर लिखा जिसमें बहरे जुल्मत में चला दिए घोड़े हमने। एंड उसके बाद उन्होंने बोला कि हम इफ़ यू हैव मोर शो अस इट। तो आई शोड देम मोर एंड बाय द आई थिंक वाज 14-15 तो डॉन में मेरा हर हफ्ते कुछ आता था। तो आई थॉट वाज अ बिग शॉट एट दैट पॉइंट एंड फिर वो होता गया और इट वाज ऑलवेज कल्चरल और आर्ट फोटोग्राफी। आगे जाके आई वेंट टू कॉलेज। व्हेन आई केम बैक फ्रॉम कॉलेज there was a whole bunch of friends. We were there. Actually, prior to going to college, I was approached by Shakila Chhabra, and she had a magazine called Teenager. And they asked me to do fashion, and I'd never done fashion before. So it was fun. It was, we used to get a budget of I think 1,500 rupees. और 1500 में हम समोसे लेते थे, सैंडविचेस लेते थे, जाके कोई किसी भी सिंध के अंदर कोई भी जगह चले जाते थे। टेक फ्रेंड्स क्लोथ्स विद अस, मेक फ्रेंड्स इनटू मॉडल्स। आई हैव हैड Sana Safina's model of mine in those days. And we'd do these fashion shoots and enjoy ourselves and come back. And then the 90s, 80s turned around. And a whole bunch of, I came back from college और उस ज़माने में यहाँ फैशन शुरू हो रहा था। हुआ नहीं था, बस थोड़े से लोग थे जो काम कर रहे थे। तो myself, तारिक अमीन, फीफी हारून, we sort of became a clique together और फिर हमने हेरल्ड मैगजीन के लिए फैशन शुरू किया। फिर उधर से बस फिर दौड़ने लग गया फैशन में। चलिए ज़बरदस्त। Was it an easy journey or a difficult one? मतलब पैशन होता है तो आई एम श्योर कि इजी हो जाता है, बट स्टिल मैं ये सवाल इसलिए आपसे कर रहा हूँ क्योंकि देयर लॉट्स ऑफ न्यू कमर्स। आप देखें हर लड़का आजकल कैमरा लेके घूम रहा है इन वेडिंग्स, इन बर्थडेज। एक पोस्ट आप फेसबुक पे करें, नीड अ फोटोग्राफर, सो यू गेट मतलब टन्स ऑफ मैसेजेस दैट यस आई एम अवेलेबल। तो वाज इट एन इजी जर्नी और डिफिकल्ट वन? और जो नए लोग आ रहे हैं उनके लिए क्या आप मैसेज देंगे? जब मैंने शुरू किया था ज़माने में कि फ़ोटोग्राफर सिर्फ 2-3 थे। रूहा गजनवी थी, एक आसिफ रज़ा थे और उसके अलावा आई थिंक कोई था भी नहीं। तो जब मैंने आगाज़ किया था विद माई करियर, देयर वाज नो कंपटीशन। इट वाज बट देयर वाज नो मार्केट ऑल्सो। वी क्रिएटेड आवर ओन मार्केट, वी क्रिएटेड आवर ओन कंपटीशन। तो उस ज़माने में द डिफ़िकल्टी वाज योर सेल्फ. You had to overcome whatever your own, I think your own shortfalls were. You had to overcome them to create. Basically, you're asking me because I was here in a time when there was nothing. So it was we were starting from scratch, and because we were starting from scratch, we had to create our own hurdles to overcome. And our hurdles weren't the same as the hurdles you see in today's day and age. In those days, we used to have our hurdles were trying to get magazines to publish color photographs. जब मैंने टीनेजर में काम किया था तो टीनेजर में कलर तो होता ही नहीं था, और हमारे एक पेज होता था फैशन का। तो हम जो 1500 रुपए जो लगाते थे हम अपने
फुल फैशन शूट के लिए, वो एक पेज में होता था, फिर लड़ाई करके हमें 2 या 3 पेज मिले. ओके, दैट वाज द हर्डल्स वी केम अक्रॉस. एंड देन व्हेन Herald being a serious, news reporting magazine, for them to put fashion into their pages was a big thing. So that was also another, that the hurdles were these hurdles, not what a hurdle which a photographer now. A photographer now, the biggest hurdle a photographer has at this present time is other photographers. Exactly. You have to jump ahead of the pack in order to get a job. Okay, yeah, now I understand, because nowadays we have so many brands, you can do photography with them. Very good. But at that time, the time you were talking about, I think you have to make things work for you. Like, Yes. there were not many magazines, and yes, I think the hurdles were different at that time. Now we have got different hurdles. Bilkul, that's exactly it. Very nice. So the youngsters who are all watching this and who are, what we call, who are upcoming photographers, see, these are the challenges they face, and now you have more opportunity. So, but you have got more challenges now. Okay, Tapu bhai, what is the most challenging project that you have worked on, that you thought, यार ये मैं किस project में आ गया हूँ और ये खत्म कैसे होगा, मैं करूँगा कैसे इसको? There's so many different challenging projects. ये एक नहीं बोल सकते. नहीं, कोई एक होता है ना जो आपके दिमाग में रहता है, यार ये project था जिसको मैंने overcome किया और किया मैंने. I think जो अभी तक मेरा सबसे बड़ा चैलेंज है is मेरे पास 40 साल का आर्काइव है. And I need to publish that archive. And the biggest challenge is convincing people with money to spend money on photography books. फैशन के लिए, और अगर खूबसूरत सी लड़की है तो उनके लिए वो पैसे दे देते हैं. ओके, इफ द recent thing I'm working on is I've been archiving photographs of Karachi, the old buildings of Karachi, for the past maybe 30 years, and I've now put it all together and I showed it to people to publish. कितनी pictures होंगी approximately अभी तक? हज़ारों के हिसाब से होगी, बट यू हैव टू एडिट इट डाउन. अगर ज़्यादा से ज़्यादा 100-120 पेज की बुक होती है तो यू हैव टू एडिट ऑल दैट डाउन. बट टू फाइंड अ पब्लिशर नाउ, दैट्स माई बिगर प्रॉब्लम. कि लोग है ना, ये मेरे पास I've got 11 books out, but they're all about fashion and about this and about that. So fashion becomes this, it's an easy concept for people to understand and आराम से पैसे लगा देते हैं उसमें. Culture and history, nobody wants to pay for. Obviously, देखिए, कोई पब्लिशर भी होगा, आप उसके पास जाएंगे, वो कहेगा भाई मेरी इसकी कमर्शियल वैल्यू क्या है, if I publish this, how many people going to actually buy it? वही वाली बात. No books have commercial value unless you're J.K. Rowling. No books. In Pakistan? No, almost anywhere in the world. It's a passion project. You spend money and don't expect it to come back to you, because it's never going to come back to you. Very nice. Acha, everyone has a mentor, everyone has a person that they admire. Who is that person in your life that you admire? My mentor would have been my father, because he's the one who gave me my camera. उन्होंने हमें इतना टाइम दिया कि मैं, basically I was a बच्चा at that time, so I didn't have finances, I didn't have anything. He's the person who invested in me per se. उन्हें वो मेरी पढ़ाई एक होती थी, और मेरे पास क्या होता था कि आप when I was studying, it was at school के टाइम में आपने स्कूल का काम करना है, कुछ भी नहीं करना है, उसके बाद अगर फोटोग्राफी करना है, होमवर्क ख़त्म करके फिर करो. So then he used to help me in that. I had to, if I took photographs, I had to print them. उस ज़माने में तो डिजिटल नहीं था ना, आपने खुद डार्क रूम के अंदर काम कर रहा था. So he helped me in that, and he invested in that thing, and he was very helpful throughout. I remember जो आपने डार्क रूम वाली बात की, I once went into a studio जहाँ पे आप पिक्चर खिंचवाते थे, और ये कल्चर था उस वक्त कराची में कि ईद पे या कोई फंक्शन पे आप जाके स्टूडियो में पिक्चर खिंचवाते थे मोस्टली, और फिर वहाँ जाके वो पिक्चर देते थे, फिर वो पिक्चर वो धुल के आती थी, और वो जो स्टूडियो वाले थे, अब तो सेलफोन की वजह से और DSLR जो आ गए तो वो तो ख़त्म ही हो गए वो स्टूडियो जो है जहाँ पे आप जाके पिक्चर खिंचवाते थे, और पिक्चर वो धुल के आती थी, फिर काफ़ी टाइम बाद, एक दिन बाद वो करते थे. अब तो दैट कल्चर इज ऑल गॉन नाउ, है ना? इट्स नॉट टोटली गॉन, ये नहीं कह सकते. पाकिस्तान में तो चले गया, बट नाउ इट्स नोन एज एनालॉग फोटोग्राफी.
अब हम डिजिटल हो गए तो ये एनालॉग भी नाम आ गया. तो योर एनालॉग फोटोग्राफी इज नाउ बिकम वेरी इलीटिस्ट एंड वेरी आर्ट ओरिएंटेड. तो आपके बहुत हाई एंड फोटोग्राफर्स जिनके पास इतने पैसे हैं कि वो एनालॉग अभी भी करें, वो छोटी छोटी जो कंपनीज हैं उनके लिए अभी तक क्या हैं. उसका रिजल्ट डिजिटल से बेहतर है? Not anymore. Now digital has gone. It's gone as far as अच्छा. film. But ये कि film की feel अलग होती है. It's got a texture to it which you can't. It takes a while for digital cameras. Digital cameras की जब आप तस्वीरें देखते हैं तो आँखों में चुभती हैं. Analog की कभी नहीं चुभती थी. हाँ, ये भी एक फ़र्क है. वो जिन लोगों ने नहीं देखी वो वाली पिक्चर्स, तो वो जो नई जनरेशन है, जो अपकमिंग फोटोग्राफर है, वो इस चीज़ को शायद समझ ना पाए कि वो जो एक धुल के पिक्चर आती थी वो कैसी होती थी. उसका टेक्सचर बिल्कुल सही कह रहे हैं. एक थोड़ा सा हार्ड सा पेपर होता था उसका, यू कैन एक्चुअली फील द पिक्चर. वो अलग ही फील थी उसकी. टप्पू भाई, जो नए फोटोग्राफर्स आ रहे हैं, अभी बहुत सारे फोटोग्राफर्स हैं, आपको सबसे ज़्यादा चीज़ जो उनमें लगती है, मतलब एक प्रॉब्लमैटिक या कोई बहुत ज़्यादा अच्छी, वो क्या है उन फोटोग्राफर्स के अंदर? क्या आपको लगता है कि उनमें वाकई में टैलेंट है, या मतलब जो सबसे चीज़ आपको मतलब एनॉय करती हो नए फोटोग्राफर, उनके बारे में क्या लगती है आपको कि मतलब ये उन्हें नहीं करना चाहिए? आई थिंक हर इंसान के पास अगर उन्होंने कैमरा उठा लिया और उन्होंने अपना नाम बना दिया तो डेफिनेटली उनके पास टैलेंट है. एंड द थिंग इज़ दैट देयर इज़ टैलेंट एंड देन देयर इज़ तुक्का. ओके, कभी कभी तुक्के से फोटोग्राफर अच्छा बन जाता है, कभी कभी टैलेंट से होता है. यू हैव टू फाइंड सॉर्ट ऑफ अ मीडियम in the middle of those two. Okay, not everything should be tukka. It doesn't take talent to become a great photographer. I know so many talented photographers who aren't famous. कोई पहचान होती है टैलेंटेड फोटोग्राफर की? आई एम श्योर आप पहचान सकते होगे. एक ऐसे ले मैन जैसे मैं हूँ, मुझे एक अच्छा फोटोग्राफर को एक नॉर्मल फोटोग्राफर से डिफरेंशिएट करते, तो मैं क्या मेरे पैरामीटर्स बनाऊँ, क्या बनाऊँ कि मैं ये अच्छा है या नहीं. मुझे तो पता है कि तस्वीर खींच के आ गई. आप किस तरह जज कर लेते हैं कि ही इज अ गुड फोटोग्राफर? अब मैं तो अमूमन जो अगर आपको कुछ चीज़ अच्छी लगी ना तो उसमें कोई रीज़न है आपको एग्जैक्टली. वो रीज़न आप कैसे बताते हैं? दैट रीज़न इज़ यूजली कॉम्पोजिशन. मैं आजकल तो डिजिटल कैमराज डू 99% ऑफ द वर्क. आपने कुछ करना नहीं होता है, पिक्चर्स ख़राब नहीं होती. फ़ोटोशॉप इतना है कि आप ख़राब पिक्चर्स को भी ठीक कर सकते हैं. बट ये है कि कॉम्पोजिशन को आप कितना काम कर सकते हैं उस पर. सो इफ़ यू डोंट नो एस्थेटिक्स ऑफ कॉम्पोजिशन, फिर आपकी तस्वीर जो भी है अच्छी तो नहीं हो सकेगी. बहुत सारे फोटोग्राफर्स अपनी फोटोग्राफी की शॉर्ट कोर्सेज की वर्कशॉप करते हैं. जी. आप करते हैं? नहीं की हैं, अभी नहीं करता. डू यू थिंक दे रियली हेल्प द पीपल? ऑफ कोर्स दे डू. मतलब 2-2.5 महीने में क्या वो चीज़ ट्रांसफर हो सकती है जो उन्होंने सीखा है वो बच्चे के अंदर? या पूरी तो नहीं ट्रांसफर होगी, बट जो इंसान पहले अगर 0 मीटर पे गया तो उसका कुछ तो होगा, कुछ तो सीख के निकलेगा. तो एवरीथिंग वर्क्स टुवर्ड्स द बेटरमेंट. तो ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ बिकॉज वी हैव रिसेंटली ऑर्गेनाइज सम फोटोग्राफी वर्कशॉप्स ना. जी. तो देखें, वो टप्पू भाई की बात बिल्कुल सही है कि अगर आप बिल्कुल 0 मीटर है तो ऐसा नहीं कि वो वर्कशॉप आपकी हेल्प बिल्कुल आपकी हेल्प करेंगी. और 0 मीटर से आपको वो अच्छा खासा नहीं, थोड़ा बहुत आपका एक कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा. तो दे आर नॉट टोटली यूजलेस. यू कैन एक्चुअली लर्न समथिंग फ्रॉम देम. ठीक है टप्पू भाई, हमने जो बात करी है कि फोटोग्राफी हैज़ चेंज since when you started up till now, from analog to digital हो चुकी है. ठीक है. Do you think it has become an expensive propagation now? एक महंगी चीज़ हो गई है अब या नहीं? क्योंकि cameras are so expensive. I think शुरू में भी expensive था. It was always an expensive hobby, even though you could cut corners and find ways out. But I think it'll always be an expensive hobby. It's not one of those things which will become really cheap unless you're mobile, shooting with your mobile phone, then no big deal. But if you want to elevate your status as a photographer, as anything, you will have to spend the money. Yes, exactly. Excellent method. If you want to elevate yourself, you need to invest on yourself. Acha, Tapu bhai, we have a skill-based college. We provide studies plus skills as well. Do you think studies and skills they can go along together? मतलब साथ साथ अगर बच्चा पढ़ भी रहा है तो स्किल भी सीख सकता है, या एक वक्त में एक चीज़ होनी चाहिए? क्या ख्याल है आपका? आई थिंक अगर आपने कुछ सीखना है तो आपने पहले तो उसकी थियोरी सीखनी है. और थियोरी होती है जो आपकी एजुकेशन में आती है. अब वो थियोरी से फिर थियोरी को प्रैक्टिस में जब लगाएंगे ना, वो आपका स्किल सेट बढ़ाता है. तो यू हैव टू हैव बोथ, वेदर इफ़ यू डू इट
consecutively and at the same time, fair enough. अगर if you have the ability to it, there's nothing better. Because अगर आपने एक चीज़ दिन में सीख ली, शाम में आपने उसके एक्सपेरिमेंट किया और पता चला कि वो आपको समझ में नहीं आ रहा, तो फिर आप दूसरे दिन वापस उसको और सीख सकते हैं. तो it's beneficial for you to be able to practice what you're learning. Excellent. Both the things can go together. और जो आप learn कर रहे हैं उसको आप practice भी साथ में कर सकते हैं. You used to be a fashion photographer? I have always been a photographer. But now you have switched to portrait photography? No, I started off with portrait and cultural based. क्या होती है portrait photography? मुझे भी थोड़ा ढूंढना पड़ा इसके बारे में. मुझे जो समझ में आई वो ये थी कि it's based on people's emotion. You capture the emotions. It's to take. किसी ने मुझे कहा, सॉरी मैं बात कर रहा हूँ, कि पोर्ट्रेट वो होती है जो सिर्फ इतनी आपकी तस्वीर लेते हैं, वो पोर्ट्रेट फोटोग्राफी होती है. मैंने कहा ऐसी पोर्ट्रेट फोटोग्राफी नहीं होती. मैंने कहा वो सबने के पोर्ट्रेट खींचिए आपको और तस्वीर हो गई. मैंने कहा मैं समझा शायद यही होगी. मैंने कहा बेटर आस्क द एक्सपर्ट हिमसेल्फ कि भाई ये पोर्ट्रेट थी तो यहाँ तक ये तो पोर्ट्रेट नहीं होगी ना. क्या होती है पोर्ट्रेट? उसको नैरो डाउन कर लें तो बस बोल रहे पोर्ट्रेट फोटोग्राफी ये फोटोग्राफी है जिसमें इंसान हो. जिसमें इंसान हो. और इंसान को आप ऐसे पोर्ट्रेट करें कि उनके जो कैरेक्टर हैं वो बाहर निकले. मुझे थोड़ा सा ये समझने में मुश्किल हुई है. थोड़ा सा आप क्लियर करेंगे? Anybody can take a picture of somebody. Okay, that's just a snapshot. ठीक है. But when you take a picture of a person with getting their character and their subject of the character out, then you create How a portrait. How can you do this? It's very easy. It's when you for what I see portrait photography as, it's a conversation of a photographer with the subject. So I sit down my subject, I will have chats with them, I'll pull out what I feel is there, what is their inner thing. Maybe there's something they don't want me to know, maybe they're hiding something. It depends on that, and that way you create a portrait. So I consider myself a portrait photographer. I've been doing that for so many years. So जबरदस्त. सबसे अच्छी बात ये कि मुझे अभी भी ये चीज़ समझ नहीं आई है, लेकिन मुझे पता है कि कोई बहुत ज़बरदस्त चीज़ है. मुझे थोड़ा सा इसको समझने में टाइम लगेगा. क्या कहा है टप्पू भाई ने कि वो इंसान के साथ बैठते हैं, उससे बात करते हैं, फिर वो कैरेक्टर बाहर लाते हैं, वो फोटोग्राफ में कैप्चर करते हैं. बहुत से लोग आपको शायद ये चीज़ समझ आए, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आप सोचेंगे, रिसर्च करेंगे तो शायद आप क्या करें. और मैं भी यही कोशिश करूँगा. Nikon took 32 photographers around the world tour? No. They selected 32 photographers from around the world. And you were one of them? Yes, and they didn't take America. They left America out, but everything around the world, but America, USA. क्या था वो? थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे एक्सपीरियंस. उन्होंने You were the only one from Pakistan? I was the only one from Pakistan. ये देखें, ये बात होती है ना. ठीक है, कैसा रहा आपका वो फिर? They took 32 photographers from all around the globe, and they brought them to Japan. They presented us with their new fancy new camera, and then they divided us in batches, and they, if they were commercial photographers, they went to do fashion shoots, etc. When they were nature photographers, they went to do nature stuff. They were landscape photographers, they went to Mount Fuji. So then they entertained us for about 5 days, which was very nice, and it was very nice. I met photographers from all over the world. You were into fashion photography at that time? I was in fashion photography. That's what I'm known for. So yes. Is fashion photography easier as compared to portrait, or both of them their own difficulty level? Okay, for me, fashion photography is just an elaborate portrait. That's it. ये बात भी थोड़ी सी टेक्निकल है, जो कोशिश करूँगा समझने की. थोड़ी सी इलेबोरेट है किसकी पोर्ट्रेट फोटोग्राफी की आपने कहा? नहीं, fashion photography is just a portrait with a lot of shusha around it. That's it. Kapde shusha, makeup shusha, that type of thing. Tapu bhai, you are into jewelry making as well? Yes. Can you tell us something about that part that you do? Okay, I am a part of a family legacy of I don't know how many hundreds of years. So that's why the Javeri is from Johari. Yes. Okay, so I'm a Javeri. And I run a jewelry shop which makes bespoke jewelry for clients. And I do the designing and help in the creation, and that's it.
Any specific, like, can be worn in any wedding or Yes, it's casual if you're going to the party? you know, as a bespoke jeweler, somebody who makes things to order, you basically cater to whatever the client wants. So that if the client wants a shadi, you get the shadi stuff. If they want, like, you know, something to wear, you know, daily or whatever, then you'll get that. So it's basically a whole range of products you create which match whatever the client needs. Do you actually know how to make jewelry by yourself? ना कारीगर भी तो होते हैं लोगों के, I या ha- आप खुद भी बनाते हैं? हमने खुद सीखना पड़ता है. मेरे वालिद साहब ने, देखो, जब my history is I studied in Sadr. My father's shop is in Sadr, and every day after school I used to walk from school to my father's shop, and then he used to take us home. During that walk I would photograph all of Karachi. When I used to come there, I used to have to wait for a while till my father got free to take us home. So during that time, he made sure that we did something. So I used to either sit with one of the karigars and see what they were doing. So you had to learn everything according to my father. I have a good Mehman father who didn't want you to waste your time. Okay. That art is transferred from generation to generation, right? Yes, yes. Is it a difficult art to learn? Well, I think if you have aesthetics and a creative background, anything is okay and easy for you. We have studies of fashion and media, business, medical, engineering, IT, you name it. Do we have any study related to jewelry making? We don't have any studies or any degree related to jewelry making, or do we have it in No, Pakistan? I don't think we formally have. We do in certain places, but not in Pakistan that I know of. Because I've also well, I didn't really study. I did a little bit of an apprenticeship in Greece with a famous jeweler out there. And so he gave me an idea of aesthetics and jewelry and how they made their jewelry. But everything jewelry oriented in Pakistan is apprenticeship. So you always have a main jeweler and he'll have a chota who'll sit with them, and the chota will eventually become the main jeweler after that. जब मर जाते हैं तो उनके छोटे बन जाते हैं कारीगर. So that is more apprenticeship than anything. Tapu bhai, you were in the fashion industry, but you still are actually with this fashion industry. Your favorite artist that you always enjoyed working with? Not just one, if your favorite, whom you look forward to, यार इसके साथ shoot है यार बहुत enjoy. Are we talking models or? Anyone, any artist. I've had my favorites I've worked with over the years. I remember Amna Haq was one of my favorite models, and I think I've done loads of work with her. It's always wonderful working with Deepak Parwani and Rizwan Beg and so many of these. Nabila is another creative person I love working with. Tariq Amin, another one. So I've basically worked with everyone, and you normally work with only people you're comfortable with. So if I, worked with a designer I didn't quite care for, or I didn't like their vision, then you sort of did one shoot and then you stayed, didn't do the second one. So if I've worked with them, then they know I like them. Okay, that's fine. In 2020, you got the Lux Lifetime Achievement Award. Yeah. Basically, they just mailed it to you because of the coronavirus. Yes, I was the only one who got the award in a dabba. Okay. Yeah. What were you doing in the COVID period? Because everything was closed, and you were still doing photography outside, or you just... I had the best time in COVID. During COVID, जब COVID शुरू हुआ, तो पहले मैंने सोचा कि पहले I think 4-5 दिन तो सारे TV में जितनी भी चीज़ें हैं वो देख ली, उसके बाद बोर हो गए. So then I thought, let me do these short tutorial videos. So I did a ton of tutorials on photography, stuff you can do at home, which stuff which I could do, even like gel printing and vinegar printing and things like that. So I did all that. Then I got bored with that and done with that. So then I thought, what should I do? And 2 doors down from my house was a gentleman who owns a candle company. तो मैंने उनको चौकीदार को भेजा उनके घर, बोला कि भाई मुझे कैंडल बनाने वैक्स भेजें. तो he sent me wax. And then he told me कि
वैक्स कर रहे हैं तो मोमबत्तियाँ बना रहे हैं तो साबुन बनाने में ज़्यादा मज़ा है, मैं भेज रहा हूँ. तो ही सेंट मी साबुन. So then I started making candles. I started making soap. I had a great time. I made videos of everything. So I put it on my YouTube channel, and that was it. Okay, you have a YouTube channel as well. I don't really have a YouTube. I have an IG channel. Okay. Yeah. You have met so many photographers Yeah. from your field in Pakistan and abroad as well. Who is your favorite one? You think that person, he has really got the spark? But all over the world, anyone? I have a friend who I can really look up to because I think he's an amazing photographer, Arif Mahmood. So him and I, we have this weird friendship in that I don't like photographing with anyone else around. Arif and I can photograph without a thought in mind because we're in sync when we go places. So I would definitely look up to him. I think he's an amazing photographer, and apart from that, a great friend and somebody I'd love to work with. You have traveled most of the world. What is the favorite spot that you think? ये तो एक photographer's paradise है. यहाँ पे चीजें automatically हैं. Obviously we have. I suppose तो पाकिस्तान as well, but throughout the world कौन सी एक ऐसी country है जो कोई ऐसा spot जो आपको लगा यार ये जगह थी जिसके बारे में? I hate to say this, but I am a pure-bred Pakistani who loves his own country. मुझे जब मैं कहीं और जाता हूँ, when I'm photographing, I feel like मैं tourist की तरह photograph कर रहा हूँ. And it's true. When you do travel photography, you usually are a tourist and looking at a place through like this glazed concept, and it's all nice and hunky-dory. But when I'm in Pakistan and I'm photographing, I feel like I'm getting real pictures. Any one specific place that you like? I love photographing Sevan. It's a gorgeous place to photograph. It's got such interesting looking people. It's always busy. It's always buzzing. It's full of color, full of life, and it's quintessentially Sindh. So I love photographing there. तो जो लोग कराची में हैं और ये पॉडकास्ट देख रहे हैं तो आपके बहुत ही करीब 3 hours drive from Karachi? Yeah, 3 or 4 hours drive from Karachi. You can always go to Sevan. बहुत ही ज़बरदस्त जगह जैसे बताई उन्होंने. कोई और जगह इसके अलावा हुंजा लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा है. Hunza is very photographic, very beautiful, with lovely people. If you want to be even more secluded, तो उससे ज़्यादा माने उससे कम लोग हुंजा से नीलम वैली है. कश्मीर. हाँ, कश्मीर में नीलम में because वो एक साइड पे वो बॉर्डर है तो इंडिया की गोलियां से यहाँ आती हैं तो वो कोई जाता नहीं है वहाँ. तो that's more secluded. तो you get more authentic photographs, and also the people are very open and loving. But I think if a photographer from anywhere in the world just dropped in Pakistan, anywhere, wouldn't make a difference. He would find the most interesting places to photograph right there. Depends all on the photographer, right? Yeah. A young guy, 15, 16 years old, watching this podcast, doesn't have any means or resources to buy a camera. What would be your message to that person? How he can fulfill his dream, his passion, anything that you want to say that will encourage him or her? Okay, your mobile phone is now super powerful. You can use it to take photographs. It doesn't have to be once you create a portfolio of something which is exquisite and excellent, you will immediately find a market for it. It doesn't make a difference. There's no, people, if I'm sitting in a commercial agency and I am going to hire a photographer, okay, if I see somebody with talent, I will immediately hire them as compared to Chacha Mama Ka Bhai. Okay? So you don't have to worry about nepotism. You will get a job if you have the talent. ज़बरदस्त बात है. If you have the talent, बहुत ही अच्छी बात की टप्पू भाई ने. इसमें nepotism का कोई मसला नहीं है. If you have the talent, people will notice you, they will hire you. और सेल फोन आजकल आपके पास है, everybody can buy it. इतना ज़्यादा expensive proposition नहीं है. आप ख़रीद के तस्वीरें खींच सकते हैं. सिर्फ आपका talent मैटर करता है जो इस सेल फोन के ज़रिए आप दुनिया को दिखा सकते हैं. इसमें add on to this because लोगों को मालूम नहीं कैसे प्रोजेक्ट करना चाहिए अपने खुद को. अगर आपके पास इंस्टाग्राम, हर इंसान के पास इंस्टाग्राम है, तो आपका खोता फ़ोन भी
इंस्टाग्राम के लिए अच्छी तस्वीरें ले सकता है। आपके इन द एंड ऑफ द डे आपकी जो कॉम्पोजिशन है और आपकी एक्सिक्यूशन जो है वो इंस्टाग्राम में आप बहुत ही ज़बरदस्त सा कोई पेज बना दें और बिलीव मी आपको फॉलोअर्स आराम से और उसके बाद फिर काम भी आराम से मिलेगा। इफ़ यू हैव द विल ऑब्वियसली यू विल फाइंड द वे। बहुत ही ज़बरदस्त बात टप्पू भाई ने की। फ़ोन इंस्टाग्राम पे अकाउंट बना है, ये मत सोचें कि मेरे पास कैमरा फैंसी कैमरा है या नहीं। जस्ट पिक अप योर सेल फोन, यूज़ योर इमेजिनेशन, यूज़ योर टैलेंट, टेक फोटोग्राफ्स, पुट इट ऑन इंस्टाग्राम। अगर वो टैलेंट इस तरह है कि वो स्पॉटलाइट में आ जाएगा तो एनी वन विल नोटिस इट, समवन विल नोटिस इट इन फैक्ट। और आप जो ब्रेक चाह रहे हैं, ये सवाल मैं करने वाला था लेकिन टप्पू भाई ने खुद ही इसका आंसर दे दिया कि सेलफोन ही को आप यूज़ करते हुए जिस जगह आप पहुँचना चाह रहे हैं फोटोग्राफी में स्पेसिफिकली, वो आप वहाँ पहुँच सकते हैं। किसी ने इंस्टाग्राम पे अपना आईडी भी बना लिया है और पिक्चर्स भी डाल दिए लेकिन नोटिस नहीं हो रहा, कोई देख नहीं रहा। तो कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे वो बच्चा जाए जहाँ पे वो नोटिस हो सके? एक तो आप जब आप अपलोड करें तस्वीरें तो सारे हैशटैग्स लगाएं, हर इंसान को तंग कर लें, फ़र्क नहीं पड़ता है। अच्छा। सारे एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ को सारे इंटरनेशनल जो हैं फ़ोटोग्राफी के साइट्स को सबको टैग कर लें, फ़र्क क्या पड़ता है उनको। और उसके अलावा फिर आपका ये जो इंस्टाग्राम आपका पोर्टफोलियो बन जाएगा। इस पोर्टफोलियो के ज़रिए आपको सारी चीज़ें खुली हैं। आप अगर एक भी इंसान देख ले कि अच्छा फोटोग्राफर है, अच्छा काम है, तो आपको खुद ब खुद कांटेक्ट कर लेंगे। मेक श्योर दैट यू यूज हैशटैग्स, बहुत ही ज़बरदस्त बात है। इफ़ यू आर यूजिंग द हैशटैग्स, सभी को उसमें आप टैग कर दें। इवेंचुअली समवन विल नोटिस यू इफ़ योर फोटोग्राफ्स आर वर्थ नोटिसिंग। वही वाली बात है। थैंक यू सो मच टप्पू भाई फॉर गिविंग अस टाइम। और बहुत ही ज़बरदस्त बातें, मेरी ही खुद नॉलेज में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। और जो नए फोटोग्राफर्स हैं, अपकमिंग फोटोग्राफर्स हैं, आई होप आपको ये पॉडकास्ट बहुत पसंद आया होगा। टप्पू भाई, इन द एंड कोई एक मैसेज जो आप देना चाह रहे हो यूथ को, यूथ ऑफ पाकिस्तान, नए फोटोग्राफर्स, किसी को भी, एनी मैसेज दैट यू वांट टू गिव? वेल, नए फोटोग्राफर्स को यही बोलूँगा कि फ़ोटोग्राफी इज़ समथिंग यू हैव टू एक्सपेरिमेंट एंड ट्राई विद। आप बोल्ड बने, हर चीज़ करें, फ़र्क नहीं पड़ता, बट द मोर यू फोटोग्राफ द बेटर यू विल बिकम। इट रियली इज़ प्रैक्टिस मेक परफेक्ट वाला जॉब। तो तस्वीरें लें खूब सारी। थैंक यू सो मच। तस्वीरें लें खूब सारी। इसी बात के साथ पॉडकास्ट ख़त्म करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।